The video I asked you how to plan, right? In that, the essay topic I took and I wrote that today. Okay, so subject verb agreement 20 rules. See, main चीज बड़ी simple है. Basic funda is very simple. It is that in subject verb agreement simply means the subject and verb must agree in number. More specifically, verb has to agree with the subject. It is not other way around. Verb has to agree with the subject. If subject is singular, verb has to be singular. If subject is plural, verb has to be plural. Now the problem क्या होती है? People are not actually able to identify number one subject वाला word कौन सा है and two subject singular है कि plural है. Yes, sir. Verb में तो singular plural आपके helping verb भी होते हैं. Is are am was verb वही होते हैं. Yes, sir. Yes, sir. It is the subject which actually has to be understood. Subject singular है, ये subject plural है, because verb Okay, has sir. to agree with the subject. Okay, sir. And इस चीज को check कर लेंगे. There are 20 rules. Rules. That how subjects are written differently. Okay, how they are written differently, and sometimes they are singular, sometimes they are plural, and how can we identify whether the subject is singular or plural? Because that will Yes, sir. decide the kind of verb we have to use. And ये singular plural actually only आपके helping verb ही बताते हैं. फर्स्ट आपको हेल्पिंग वर्ब बताते हैं सिंगुलर है कि प्लूरल है. इसके बाद में Yes, sir. अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाला है तो उसके बाद जो एक्शन वाला वर्ब आ रहा है वो प्लूरल फॉर्म में जाएगा. Yes, sir. सो रूल नंबर वन. Now there are only two type of sentences where we don't have helping verb, and that is only present simple tense and past simple tense. Except for these two constructions, all other constructions have helping verb. Totally, there Okay, are sir. 12 type of constructions. दो में helping verb नहीं होता, बाकी 10 के 10 में होता है. So That it is says present now, simple. आप पढ़िए, you read it. Yes, sir. Subject rule number one. Subjects and verbs must agree in number. This is the cornerstone rule that forms the background of this concept. The dog growls when he is angry. The dogs growl when they are angry. Now that word is actually growl. So, Growl. yeah, so it is. It says subject and verb must agree in number. Subject है dog. Yes, sir. Dog is a singular. So verb has to be singular. Yes, sir. And दूसरा ये sentence की construction is telling me ये जो sentence है ये present simple tense का sentence है. Yes, sir. Because present simple tense का structure है subject plus simple verb या Yes, sir. बेस वर्ब प्लस एस और ईएस और आईएस. एस ईएस आईएस को ऐड करने के अपने रूल हैं. Yes, sir. एंड दोज रूल्स आर इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर then I have to add either s or es or is with the verb. Now in this case subject है dog which is singular Yes, sir. एंड सेंटेंस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है एंड वर्ब सिंपल वर्ब है. which means in this sentence I add either s or es or ies with verb. एंड वो जो Yes, sir. स्पेलिंग का रूल है उसके हिसाब से इस वर्ब में s ऐड करना पड़ेगा. Yes, sir. Dog singular, the verb singular, but if the subject is plural, that is dogs, Yes, sir. then I don't have to add s or es or is with the verb. Yes, sir. That's the rule of grammar. So first rule is subject singular, verb has to be singular. Subject plural, verb has to be plural. Yes, sir. Okay. So identify करना पड़ता है one sentence का which part is subject. Number two,
Is that subject singular or plural? Okay, so this is rule number one. Rule number two. Don't get confused by the words that come between the subject and the verb. They do not affect the agreement. The dog who is chewing on my jeans is usually very good. Now, कई बार क्या Correct. होता है between the subject and the verb if phrase is added. Yes, sir. Okay. Now वो जो phrase है, it is added just to give some information, additional information. Yes, sir. आप उस phrase को निकाल भी दोगे, then also the meaning doesn't disappear. So हमारा इस sentence में verb वाला word कौन सा है? Verb हाँ, chewing. no, No, is is. And the subject वाला word कौन सा है? dog. Dog. So dog is singular. Verb Yes. has to be singular. Yes, Now, sir. who is chewing my jeans basically is an additional information. आप इसको निकाल भी दोगे sentence okay. Yes, sir. So ये phrase है and who is chewing on my jeans actually is not a complete sentence. Yes, sir. Okay, then rule sorry it's a complete sentence. ये पूरा sentence है. इसमें subject भी है, verb भी है, but ये Yeah. okay. So it's a complete sentence, but it's a phrase inserted in another sentence. Yes, Rule sir. number three, okay, हाँ. Propositional phrases between the subject and verb usually do not affect agreement. Now this is very similar to this also. Don't get confused by words that come between the subject and Between. verb. Okay. Yes, sir. यहाँ भी यही है. Now subject क्या है? Colors. Colors. Subject is color. Colors singular है कि plural है? Plural. So we need plural verb. So is का plural है are. Yes, sir. Okay. So when the subject is plural, verb has to be plural. Yes, sir. And जैसे ये आपके subject and verb के बीच में जो prepositional phrase आ गई of the rainbow is a prepositional phrase. Don't get confused by that. Identify Yes, sir. which word is verb. Identify which word is subject. Verb has to agree with that. And in this case, Yes, sir. subject is colors. That's plural. So verb has to be plural. Yes, sir. If I say the colors of the rainbow मेरे को लगता है rainbow तो singular है, यहाँ is डाल दो no, here the subject is colors. Yes, sir. Then fourth, When sentence start with there or here, the subject is usually placed after the verb. So care needs to be taken to identify it correctly. There is a problem with the balance sheet. Here are the papers you requested. so we have some sentences starting with the there, here, or it. Yes, sir. The normal formula is sentence का SVO, subject, verb, object. Subject is the first word, verb is the second word, and object is the last word. Yes, sir. Those sentences which start with the there or here or it, क्योंकि sentence का ये first word यही होता है, but this is not subject. Yes, sir. Subject verb के बाद में आता है in these cases. So in all sentences starting with there, here or it, these words are not subject. Subject is placed after the verb. So Yes, sir. now I shall have to check which sentence is the subject, which word is the subject. Is that singular or plural? Okay. Yes. So first Balance. sentence का जो subject है वो है balance sheet. Yes, sir. Balance sheet is singular. Yes, sir. So verb बना is. But अगर Yes. balance sheet के बदले होता बैलेंस शीट्स तो वो Yes. प्लूरल हो जाता
फिर देयर इज नहीं होता, मतलब There are according. प्रॉब्लम्स देयर आर प्रॉब्लम्स विद द बैलेंस शीट. Yes, sir. And second sentence clear. Subject is papers. Papers is Yes, sir. plural. So verb has to be plural. Here are the papers. So there here each वाले जो sentence है जो यहाँ से start होते हैं, ये हम लोग नॉर्मल टेक्निकली बोलते हैं here there it are notional subjects but they are not actual subjects. Actual subject जो Yeah. verb के बाद में आता है, क्योंकि Okay, sir. इनके immediate it there here it के immediate बाद verb आ जाता है. Yes, sir. Rule number 4. Then rule number 5. Subjects don't come before verbs in questions. Make sure you accurately identify the verb subject before deciding on the proper verb form to use. Does your rabbit usually eat grass? Where are the pieces of this puzzle? Actually, we have discussed now the structure of interrogative sentences. याद है? Mm-hmm. What is the structure? हाँ सर, उसका WH, हाँ, right? हाँ, Then you have his sub object, no, subject, no, do or does, depending. no, no, no. The formula is WH. Actually, formula is helping verb plus subject plus main verb plus object. Okay, helping verb. Actual formula is helping verb plus subject plus main verb plus object. And if we have to use WH word, then we place WH word in front of this whole formula. So it becomes Okay, WH word plus helping verb plus subject plus main verb plus object. okay, sir. Okay, now सिंगुलर प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब को भी होना होता है. अगर आपका सब्जेक्ट Mm-hmm. प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा और एक्शन वर्ब भी प्लूरल होगा. Mm-hmm. नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में व्हाट वी से टेक्निकली वी से वर्ब रिवर्सल टेक्स प्लेस इन सेंस Yes, sir. दैट वो वर्ब जो सब्जेक्ट के पीछे आता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के आगे आ जाता है. Yes, sir. So यही लिखा हुआ है subjects don't come before verb in questions. Yes, sir. Subject actually come after the helping verb because मेरा जो sentence है interrogative sentence वो helping verb से start होता है. Yes, Clear? sir. Right? Yes, sir. So तो मेरे को पहले आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट क्या है. इज इट सिंगुलर और प्लूरल? तो अगर सिंगुलर है Yes, sir. तो जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आया हुआ है वो भी प्लूरल, वो भी सिंगुलर होगा. Yes, sir. और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब के आगे आया हुआ वर्ब भी सिंगुलर होगा. Yes, sir. राइट. नाउ डब्ल्यूएच वर्ड का हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता. Yes, sir. इट इज ओनली हेल्पिंग वर्ब एंड द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब. सो नाउ does your rabbit usually eat grass? Yes. Here the subject is a rabbit. Your Yes. subject नहीं है, your adjective है. Yes, sir. Okay. Subject is rabbit. Now any sentence third person का है, sorry, simple present simple tense का sentence. Mm-hmm. Present simple tense के sentence में with verb we have to add s, yes or I. And Yes, sir. क्योंकि इसमें simple verb इसका जो इस सेंटेंस में हमको अपनी तरफ से डालना पड़ेगा डू डस डू या डस एज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में. Yes. अभी क्योंकि रैबिट सिंगुलर है इसके लिए हमको
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू नहीं हम्म डज यूज करना पड़ेगा। ये हमने उस टाइम देखा था जब हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। हम्म दूसरा, एक बार हमने दिस रूल अप्लाइज ओनली टू प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल टेंस सेंटेंस। तो एक बार हमने ये हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस या आईएस लगा दिया, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंपल वर्ब होगा। यस सर। सो डज, नो जी, जो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब है वो डू। डू में हमने ईएस लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके लिए जो हम्म वर्ब अब आएगा वो वर्ब ईट्स नहीं होगा, ईट होगा। यस सर। इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है एक्चुअली वो है योर माई माई रैबिट यूजली ईट्स ग्रास। ये जो क्वेश्चन वाला यस सर। सेंटेंस है ना, इंटरोगेटिव, इसका एक्चुअली जो एफर्मेटिव सेंटेंस है योर रैबिट यूजली ईट्स ग्रास नहीं है, इट इज माई रैबिट यूजली ईट्स ग्रास। क्योंकि ईट अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसके लिए हमने यहाँ एस एस या आई एस लगाया। नाउ वेयर आर द पीसेस? पीसेस प्लूरल है, यस सर। पीस सिंगुलर है, पीस प्लूरल है, इसके लिए हम यहाँ पीस नहीं लगा सकते, हमको आर लगाना पड़ेगा। अगर हम्म ये पास्ट का होता तो पास्ट का होता वेयर वर द पीसेस ऑफ दिस पजल, या वेयर इज द पीस ऑफ दिस पजल। So care to be taken interrogative sentence. Sorry. नो नो सर। ओके। Okay. So in interrogative sentences, you have to take care that helping verb comes before the subject, not in positive or negative sentences. So ओके we सर। shall have to first identify which is the subject, and then आपका helping verb and main verb, action verb, both have to be हम्म either singular or plural depending upon the subject. यस सर। Rule number 6. If two subjects are joined by and, they typically require a plural verb form. Okay. The cow and the pig are jumping over the moon. एक्चुअली मजे की बात ये है, नो, चाहे आप हिंदी की ग्रामर ले लो कि पंजाबी ग्रामर ले लो कि गुजराती ग्रामर ले लो कि इंग्लिश की किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर ले लो, इट्स वर्चुअली ओके सेम। ओके। ना, इफ आई से अगर मैं सिर्फ काऊ की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा काऊ, मतलब गाय उछल रही है। ओके, मेक इट सिंपल। यस सर। ना हमारी लैंग्वेज में है सिंगुलर होता है, हम्म और अगर मैं इसकी ले लूं तो गाय और सुअर उछल रहे हैं, मैं अभी है बोल रहा हूँ, है प्लूरल होता है हमारी लैंग्वेज में। हम्म सो ग्रामर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस वर्चुअली सेम। तो क्या कह रहा है, अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं हम्म एंड दोनों को जोड़ा गया है एंड से, यस सर। देन जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। ओके सर। सो द काउ एंड पिग, सिंगुलर वर्ब इज, उसका प्लूरल है आर, एंड ऑफ कोर्स मेन एक्शन वर्ब इज जंपिंग। हम्म ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है आर। ओके सर। सो आर जंपिंग, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को, दो जो सब्जेक्ट वाले वर्ड है उनको एंड से जोड़ा गया है, और अभी ये सब्जेक्ट प्लूरल बन गया है। बट यस सर। इसकी कई बार एक्सेप्शंस भी होती है, वो आगे जाके आने वाली है। ओके सर। नंबर 7। Number seven. The verb is singular if two subjects separated by and refer to the same person or thing. Red beans and rice is my mom's favorite dish. ये थोड़ा समझ नहीं आया सर। ना, अभी पीछे बोला गया अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा गया है तो वर्ब हैज टू बी हाँ। प्लूरल। यस सर। बट यहाँ कुछ और चीज है,
ये क्या है एक्चुअली, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो बीन्स एंड राइस नहीं है। अब खिचड़ी ले लो, खिचड़ी में क्या क्या हम्म जाता है? ये बेसिकली खिचड़ी है। खिचड़ी में क्या क्या होता है? हम्म चावल होते हैं, दाल होती है, मसाले होते हैं, नमक होता है। यस इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारे हैं। हम्म और ये सब चीज जब मिल जाती हैं दे रेफर टू ओनली वन थिंग एंड दैट इज खिचड़ी। So when all these ingredients actually refer to only one final product, then the verb is singular. यस सर हम लोग बोलते हैं दाल इज वेरी टेस्टी, हम्म पर दाल के अंदर तो चार इंग्रेडिएंट होते हैं। Now we are not referring to all those ingredients separately, ओके सर but we say khichdi is very tasty, यस सर but we'll say rice, lentil, spices are used to make khichdi. Now, in this case, we are referring to ingredients separately. हम्म Okay. So, my इसको भी हम लोग बोल सकते हैं. My mother uses red beans. Okay, वो यही हो जाएगा. Red beans and rice are used by my mom to make her favorite dish. अभी हम ओके दो सर इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग सेपरेटली बात कर रहे हैं। तो हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाता है, एंड प्रोडक्ट की हम्म बात करते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो ये कह रहा है the verb is singular if the two subjects separated by and, दो हो कि दस हो, doesn't make a difference, refer to same person or thing। Okay? ये थोड़ा कंफ्यूज क्या करता है, पर देख लो इसमें देखने की चीज क्या है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हम्म सिंगुलर है। ये जो चीजें हैं वो एक सिंगुलर चीज के बारे में बात कर रही है या अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रही है, यानी इट हैज टू बी सिंगुलर और प्लूरल। सर इसमें तो सेम थिंग मतलब फेवरेट डिश के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए इज डाल रहे हैं बिकॉज डिश इज सिंगुलर ना, सिंगुलर इज डिश सिंगुलर डिश सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। सेम, खिचड़ी इज माय फेवरेट डिश यही बोलते ना, हम्म दिस दाल इज माय फेवरेट डिश, और खीर इज माय फेवरेट डिश। बट खीर के अंदर तो पांच कंपोनेंट्स आते हैं। खीर इज माय फेवरेट डिश, बट लेकिन राइस, मिल्क, sugar, and then many other ingredients are used to make kheer. Now there we are referring to ingredients separately. हम्म ये ध्यान रखना। Rule number 8 now. if one of the words each every or no comes before the subject the verb is singular. No smoking or drinking is allowed. Every man and woman is required to check in. Okay, now ये जो word है ना every, Yes, sir. each and every, now again ऐसे आप इसको अपनी भाषा में बोल सकते हैं। each and every का मतलब जैसे हर एक, Yes, sir. जैसे हर एक we are referring to everybody individually। Okay, sir. हम भी बोलते हैं हर एक को आना है, हर एक को आना है सिंगुलर है। Yes, sir. सब तो उससे सेम आते हो हैं। जाएगा ना every man and woman has to check in यस, has आ जाएगा एवरी मैन हर आदमी को। Okay, sir. जब भी प्रॉब्लम हो, मेरा ये फंडा बड़ा सिंपल है, जब भी प्रॉब्लम हो ट्रांसलेट दिस इन योर लैंग्वेज। आप अपनी भाषा में क्या करो, बोलोगे इसको। हम अपनी Mm-hmm. भाषा में बोलेंगे हर आदमी और औरत को चेक इन करना है Okay. सिंगुलर है, राइट। Yes, sir. ओके, सो ईच एवरी या नो, और अगर ये आ गया है आपके सेंटेंस में, ये वर्ड यूज किए गए हैं
So verb has to be singular. Yes, sir. Then Rule number 9. If the subjects are both singular and are connected by the word or, nor, neither, nor, either, or, and not only but also the verb is singular. Jessica and Christine is to blame for the accident. right. तो जो कंजंक्शन है जोड़ने वाली वो और नॉर नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो है सो देन इन सच केसेस वर्ब हैज टू बी सिंगुलर अगेन इसको भी हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं जैसिका या क्रिश्चियन इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है है नहीं Mhm. है जैसिका या क्रिश्चियन इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है सिंगुलर है Yeah. न जैसिका न क्रिश्चियन इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है Yes, sir. राइट सो सब्जेक्ट्स सिंगुलर है लेकिन कनेक्ट Mhm. किए गए हैं ये और नॉर आइदर और not only Mhm. but also then the verb has to be singular हालांकि वो दो दिख रहे हैं हमको बट हम इस इन केसेस में वो दोनों को कंबाइन करके बात नहीं कर रहे दोनों की अलग अलग बात कर रहे हैं then rule 10 The only time when the object of the proposition decides plural or singular verb forms is when noun and pronoun subjects like some, half, none, more, all, etc. are followed by a prepositional phrase. In these sentences, the object of proposition determines the form of the verb. All of the chicken is gone. All of the chickens are gone. right now इधर क्या बोल रहा है the only time an object of the preposition decides plural or singular is when noun and pronoun subject noun noun or pronoun subjects तो like प्रपोजिशन some, क्या हुआ half, सर? none, more, all. ये ऑफ प्रपोजिशन है यानी ये चिकन जो वर्ड यूज किया गया है इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नहीं, रिमेंबर प्रपोजिशन क्या हुआ सर? रिमेंबर प्रपोजिशन का एक प्रपोजिशन जो दो आइटम्स हैं उनका आपस में रिलेशन बताता है दो आइटम कौन से ऑल और एक चिकन यस. ओके नाउ चिकन सिंगुलर है ओके. so this needs a singular verb. ओके. But all of the chickens plural है. This needs plural verb. ओके. वैसे भी और एक रूल है वो आगे जाके आएगा वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा अगर आपको ये डिसाइड करना है तो ये देख लो कि वर्ब के साथ वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है हम्म. अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल वो कहीं आगे जाके वो भी आने वाला है राइट सो अगर मेरे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब हैज टू बी सिंगुलर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हैज टू बी प्लूरल यस सर. राइट ये The singular verb form is usually used for units of measurement or time. 4 quarters of oil was required to get the car running. ये जो मेजरमेंट के यूनिट्स हमको लगता है ये तो प्लूरल है but actually they refer to only one simple single unit single quantity 400 रुपए वहीं से now we are not talking about 400 separate rupees we are talking of this as a single unit so I say 400 rupees was required by me Mhm.
राइट? व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट रेफरिंग टू वो एक एक रुपए के 400 नोट्स की बात नहीं कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 400 एज ए सिंगल थिंग। सो ये जो हमारे मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं ना, मेजरमेंट टाइम के Mm-hmm. या क्वांटिटी के या नंबर्स के, दे रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। Okay, sir. ये बोल रहे हैं सिंगुलर वर्ब फॉर्म इज यूज फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इवन करेंसी और टाइम। Yes, sir. देन हियर, If the subjects are both plural and are connected by the words or, nor, neither, nor, either, or, and not only but also the verb is plural. Neither pigeons and sparrows nor dogs and cats are available at the store. ओके नाउ इसमें वैसे सब्जेक्ट बताने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? Subjects: सब्जेक्ट बताने वाले वर्ड्स, pigeon, sparrow, dogs, cats, या कैट्स। cats. Now all these words are in plural form. Yes, sir. All are plural. Mm-hmm. इसके पहले कहीं गया था वो नाइदर नॉर वगैरह वाला नीड्स सिंगुलर वर्ब, बट उसमें सब्जेक्ट भी सिंगुलर था। Yes, sir. बट यहाँ सारे के सारे सब्जेक्ट प्लूरल हैं। Okay. तो हालांकि इसके बीच में नाइदर नॉर आइदर और आया हुआ है, बट बिकॉज ऑल दी सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, वी नीड प्लूरल वर्ब। पहले वाला क्या था, सर? पहले केस में था जो हमारे सब्जेक्ट थे वो सिंगुलर थे, Mm-hmm. यहाँ सारे के सारे सब्जेक्ट बताने वाले वर्ड प्लूरल है। Mm-hmm. बट अगर इसमें एक भी सिंगुलर हो जाए तो रूल बदल जाता Mm-hmm. है। कैसे बदलते हैं वो शायद आगे आएगा। यस, हाँ, उसमें बोला जो नियरेस्ट होगा। हाँ, वो जो नियरेस्ट होगा वर्ब के वो डिसाइड करेगा वर्ब शुड बी सिंगुलर और प्लूरल। यस सर। ये है। पर अगर सारे के सारे प्लूरल हैं तो जैसे मर्जी आप इनको कनेक्ट कर दो, ऐसे अगर सारे सब्जेक्ट वाले वर्ड प्लूरल है, आप इनको जैसे मर्जी कनेक्ट कर दो, वर्ब हैज टू बी प्लूरल। सिंपल। 13 ये आया हुआ है, if one subject is यस singular सर। and one plural, yeah, If one subject is singular and one plural, and the words are connected by the word or, nor, neither, nor, either, or, and not only but also use the verb form of the subject that is nearest the verb. plural. That is nearest the verb. Either the bears or the lion has escaped from the zoo. Neither the lion nor the bears have escaped from the zoo. Yeah, the verb here is has या have, Yes, has singular है तो उसका plural have होता है, has is singular। yes, sir. Now in the first sentence, the subject nearest to verb is lion, Mm-hmm. that is singular, so we need singular verb. Yes, sir. In the second sentence, verb nearest to verb is sorry, subject nearest to verb is bears, Yes, sir. that is plural, so we need plural verb। हालांकि जोड़ा हुआ है आइदर और से, एंड देन इसके पहले क्या है, अगर सारे के सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो सिंगुलर सारे के सारे प्लूरल हैं, देन वी यूज प्लूरल वर्ब। बट इफ वन इज सिंगुलर वन इज प्लूरल, then whether verb will be plural or singular is decided by which subject is nearest to the verb, that is Yes. rule number 13। 14, Indefinite pronouns typically take singular verbs. oh, everybody, Everybody. anyone, etc. These type of verbs they are called indefinite, जिसमें we cannot particularly point out to somebody, Mhm. okay, but exception is all को plurally माना जाता है, everybody wants to be loved, all want to be loved। Yes, sir.
ये फर्क जान लो, ऑल प्लूरल है, एवरीबॉडी, एवरीवन एक्सेट्रा, वो सिंगुलर है, वर्ड चेंज। Everybody wants. Except from the pronoun few, many, several, both, all, some, that always take plural form. Few were, ये समझ नहीं आया, few were left alive after the flood. ये सारे एडजेक्टिव हैं, all Yes, these sir. words are actually adjectives and they can also be used as noun। नहीं, सारे के सारे, few, few का मतलब क्या होता है, more than one, Yes, sir. many means more than one, Mm-hmm. several means more than one, both means two, all means more than one, some means more than one. Mm-hmm. So all these words actually mean more than one। Few is plural. तो few का मतलब होता है थोड़े से, Yes, sir. तो थोड़े से तो एक से ज्यादा ही हो गया ना। Whether it is two or 2 lakh, all that is plural। Mm-hmm. Everything more than one is plural। Few का मतलब होता है थोड़े से। I have a few friends मतलब मेरे थोड़े से दोस्त हैं। Mm-hmm. Okay, so all these words actually refer to more than one. So that is plural. So if my Mm-hmm. subject is plural, then the verb has to be plural। हालांकि ये एक्चुअली ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एडजेक्टिव्स हैं और इनके पीछे नाउन आया करता है। few people, Mm-hmm. books, many persons, many items, right? But they Mm-hmm. can be used individually also when they are, because then we understand वो जिसके पीछे subject होता है, that is considered Mm-hmm. to be understood। But Yes, sir. all these words mean more than one। More than one is Mm-hmm. plural, so they need verb। Clear? Mm-hmm. Okay। कोई डाउट है तो बोलिए, दोबारा बता देता हूँ। नहीं, sir. ओके चलिए, 16, हाँ। If two infinitives are separated by and, they take plural form of the verb. To walk and to chew gum require great skill. Now I think I've told you ये infinitives क्या होते हैं ना, gerunds हाँ क्या सर होते हैं, बताएं. बताया To ना। be verb. Yes sir. Infinitives, two plus verb, simple verb used as noun। Use yes sir. ओके, सो टू वॉक एक्चुअली वर्ब नहीं है, हालांकि वॉक वर्ब है बट टू वॉक वर्ब नहीं है। च्यू वर्ब है बट टू च्यू वर्ब नहीं है। सो टू च्यू एंड टू वॉक नाउन है एक्चुअली, चलना और चबाना। चलना में कोई एक्टिविटी नहीं है, चबाना में भी एक्टिविटी नहीं है, चलने में चबाने में एक्टिविटी है, दैट इज वॉक एंड च्यू। हाँ सर, इसमें to walk and to chew दोनों सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर वर्ब यूज किया रिक्वायर. बट एंड आ गया ना बीच में, हाँ सर. तो एंड ने ये वैसे टू वॉक सिंगुलर है, टू चू सिंगुलर है, बट एंड ने पूरे आपके सब्जेक्ट को प्लूरल बना दिया ना। तो रिक्वायर्स नहीं होगा. तो इसमें नाउ आई नीड प्लूरल वर्ब। ओके, नाउ टू, नाउ मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ। टू वॉक रिक्वायर्स ग्रेट स्किल, ओके. टू च्यू रिक्वायर्स ग्रेट स्किल। टू वॉक सिंगुलर है, टू च्यू सिंगुलर है। हम्म. पर जब मैंने, ये तो पहले भी किया ना, जब मैंने दो नाउन्स को जोड़ दिया हम्म. and say, then I require plural verb। यस सर. तो requires सिंगुलर है क्योंकि ये सब्जेक्ट थर्ड सेंटेंस, थर्ड पर्सन, सॉरी, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। पर जब दो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं और एंड से जोड़े जाते हैं, then the subject becomes plural। यस. एंड यही यहाँ उसने बोला है इंफिनिटिव का, अगली स्लाइड में सेम चीज बोलेगा चार उसके बाद। When gerunds, right, are used as the subject of the sentence,
They take singular verb from of the verb, but when they are linked by and, they take plural form. Standing in the water was a bad idea. Swimming in the ocean and playing drums are my hobbies. Okay, now infinitive होता है verb with to used as noun. Gerund होता है verb with ing used as noun. Mhm. Right? So verb as stand, Mhm. standing has gerund because it is used as noun. पानी में खड़ा होना. Mhm. Okay. Now standing is a verb है ये singular. Yes, sir. So this needs singular verb. Was singular. Was का plural है पर. लेकिन जब Okay. हमने दो जैरून्स को एंड से जोड़ दिया तो अभी ये मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन गया जैसे यहाँ बना था इन्फिनेटिव के केस में. Yes, sir. सो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है देन ऑब्वियसली दिस नीड्स प्लूरल वर्ब. सो स्विमिंग, प्लेइंग, अब ये दो जैरून आ गए हैं. नाउ आई नीड एंड इनको एंड से जोड़ा हुआ है Yes. क्योंकि एंड से जोड़ा है. नाउ विद एंड my subject has become plural, so it needs plural verb. Yes. बीच में अगर और होता then singular. Swimming in the ocean or playing drums are my past time activities. और से जोड़ दिया तो सब्जेक्ट बन गए सिंगुलर. एंड से जोड़ा ये बन गए प्लूरल. Yes. चलिए 17 18. Collective nouns like herd, senate, class, crowd, etc. usually take similar verb form. The herd is stampeding. Now you know like we have some words. Now herd का मतलब होता है जानवरों का झुंड. Now जानवर का झुंड Yes. मतलब उसमें तो बहुत सारे जानवर हैं. But Yes. we are not referring to them as separately. We are referring to them as a whole group. ऐसे Yes, sir. सीनेट is like our parliament. हालांकि parliament में there are many members. Assembly में there are many members. But we are not referring to them separately. We are referring to them collectively. Yes, sir. So class में बहुत सारे student हैं. But when we say class, I'm not talking about students individually. I'm talking about them collectively. So Yes, ये sir. जो बहुत सारे words हैं, which are collective nouns means उस they actually mean उस word के अंदर बहुत सारे वस्तुएं हैं या आदमी हैं या जानवर हैं. But because they are collective nouns, they are taken as singular. So the herd is stampeding. Herd का मतलब है Yes. जानवरों का झुंड. Stampeding इधर उधर भाग रहा है. Yes, sir. क्योंकि अभी अभी अमेरिका में चल रहा है ना प्रॉब्लम. वो Yes, sir. अमेरिका वाले जो हमको भाषण देते रहते हैं कि उनकी कंट्री में हो गया ना. Yes, sir. तो सीनेट वहाँ तो सीनेट है. हमारे यहाँ पार्लियामेंट है वहाँ सीनेट होती है. So it's not Okay. Senate are discussing. Senate is discussing, but senators are discussing. Senators are members of Senate. So when it's Mm-hmm. a Senate, then it is singular. It's a collective noun. Senate is discussing, but members are senators. So senators are discussing. That is. Yes. Titles of books, movies, novels, etc. are treated as singular and take a singular verb. The Burrs is movie starring Tom Hanks. Okay, now you know singular to plural को convert करने का एक रूल है. वो रूल क्या है? आप नाउन में एस या ई एस या आई एस लगा Yes, दो Alna. Yes, प्लूरल. sir.
प्लूरल बन जाता है। ओके, सो बहुत बार कंफ्यूजन Yes, होता है, तो नाउन वाले वर्ड में एस या एस या आई एस लगा हुआ तो ये प्लूरल बन गया। But many times, like we don't say mathematics. When I say mathematics, each has laga, but mathematics is not taken as plural. It is taken as singular. We don't say yes, sir. mathematics are my favorite subject. Mathematics Economics, is, right? yes, sir. तो ऐसे ही जो टाइटल होते हैं बुक्स के, they actually are referring to a single book. या मूवी के Yes, sir. टाइटल में ये मूवी के टाइटल में नाम ही So, होती sir, है ना, एंड उसमें किसी नाम के sir, साथ एस या आई एस लगा है। नाउ बट दिस होल वर्ड इज रेफरिंग टू a single book or a movie, so it is taken as mhm, singular. Verbs, actually verb word है, इसका मीनिंग मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। There is a noun called verb which is singular, but verbs is plural. But here it is not referring to too many verbs, it is referring to one movie. yes. But sir, अगर ऐसा word हो, हाँ economics and mathematics हाँ, are my favorite subject आएगा ना? यस यस, नाउ अभी तो आपके दो जो सिंगुलर नाउन्स हैं उनके बीच में कंजंक्शन आ गया ना, एंड And या yes, sir. इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो वहां पर वो Yes, sir. सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा, वहां वो भी बदल जाएगा सब्जेक्ट्स। Subjects है. इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स Mhm. इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। ये केयर भी लेनी पड़ती पड़ेगी। 19 and 20 rule is very simple. Only Remember only the subject subject. affects the verb. Yes, sir. वर्ब का सब्जेक्ट के ऊपर असर नहीं होता, सब्जेक्ट का असर वर्ब पर होता है। एंड कई बार कंफ्यूजन क्या आता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में और बहुत सारे वर्ड आ चुके होते हैं, देन मेरे को सोचना पड़ता है वन सब्जेक्ट वाला वर्ड कौन सा है या फ्रेज कौन सी है, एंड उस फ्रेज को सिंगुलर माना जाएगा या प्लूरल माना जाएगा। सो सिंगुलर फ्रेज, अगर सब्जेक्ट मेरा फ्रेज है तो किस टाइप की फ्रेज को सिंगुलर माना जाता है, किस टाइप की फ्रेज को प्लूरल माना जाता है, ये 20 रूल्स उसके बारे में डील करते हैं। या किस टाइप के सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है, किस टाइप के सब्जेक्ट को प्लूरल माना जाता है, ये हैं हमारे रूल्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, it is subject and verb must agree in number, but the main way जो केयर लेनी है वो ये verb has to agree with the subject। अगर मैंने verb को सिंगुलर यूज किया हुआ है and लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लूरल, तो वो प्लूरल Mhm. सब्जेक्ट को सिंगुलर नहीं बना होगा, verb has to agree, it's not other Yes, way around। sir. So that was your subject verb agreement। Now basically I have another और एक स्लाइड है मेरे पास, प्रेजेंटेशन है, हाँ सर, जिसमें एग्जाम्पल है ना। एंड वो एग्जांपल वाला वही है जो एक्चुअली हम